Welcome to NEET Direct Day 17 program. It's Mechanical Properties of Solids Day 1. और हम करने जा रहे हैं previous year questions with full solutions. Okay, so let's start with question first. Speed of a transverse wave on a straight wire. पहले तो आपको मालूम होना चाहिए speed of a transverse wave on a steel wire, on a string, whatever. ये फॉर्मूला है इसका, राइट? P by mu. और mu क्या होता है? It's mass per unit length, यानी linear mass density. Alright, so हम यहाँ से डाटा देखते हैं. 6 ग्राम है ये मास, 6 ग्राम, तो ये मैंने किलो बना दिए, राइट? 60 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, और ये मैंने बना दिए मीटर. ऑलराइट, सो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये बन जाता है 10 पावर माइनस 2. ये आ गया म्यू की वैल्यू. ओके, एंड दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, and tension in the string is given to be mu v square by using this formula. All right, अब म्यू की वैल्यू 10 पावर माइनस 2 है. वेलोसिटी यहाँ पे दी गई थी हमें 90 मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पे दिया गया है, राइट? तो उसका स्क्वायर ले लीजिए, इट बिकम्स 81 न्यूटन, राइट? वो जीरो सेटल हो जाते हैं आपस में. तो आइए फिर फॉर्मूला लगाएं. फोर्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू वाई इनटू डेल्टा एल बाई एल. ये है हुक्स लॉ. और ये जो force है is nothing but tension in the string, so I can write like this. ठीक है, all right. So rearrange the terms. मुझे तो डेल्टा एल चाहिए, rest of the terms cross multiply करके shift कर दीजिए on the left hand side, and now make the substitutions of these terms. So substitute देखिए, ये t जो भी टेंशन हमने निकाला था स्ट्रिंग में, ये लगाया. लेंथ वाज 60 सेंटीमीटर, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलीमीटर स्क्वायर में था, मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. वाई का वैल्यू दिया गया था. ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस एंटायर एक्सप्रेशन. सी व्हाट वी गेट. इट इज 0.03 millimeters. All right, so let's check out. 0.03 millimeter is which option? Well, it is option D. So I put here, I mark here, option D is the right answer. Now let's move on to question second. A rod जिसकी लेंथ दी गई L0 at room temperature, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और फिर इसमें लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ये दिया गया है. दैट इज व्हेन हीटेड, अल्फा इज द लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. तो आपको बताना होगा y यानी यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन गिवन दैट द थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू मैकेनिकल कंप्रेशन. सो आई राइट हियर thermal expansion is equal to mechanical compression. All right, तो ये जब इक्वल होंगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो यहाँ पे मैंशनड है, राइट? तो थर्मल एक्सपेंशन देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा टी, और अगर हम इस टी को रिप्लेस करना चाहें डेल्टा टी से, दैट वुड शो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ऑल राइट, तो फर्दर यू कैन से दैट इट्स L बाई L नॉट is equal to 1 plus alpha delta t. तो L minus L naught by L naught is alpha delta t. कैसे किया मैंने? Simply by shifting this one on the left hand side, taking the LCM. Right? Now, delta L is equal to cross multiply कर लीजिए, तो बेटा ये एक्सप्रेशन आ जाता है मेरे पास थर्मल एक्सपेंशन का, ये. और मैकेनिकल जो कंप्रेशन है वो ये फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया इज वाई टाइम डेल्टा एल बाई एल. तो वो डेल्टा एल एफ एल बाई ए वाई है ना, ये कहलाता है मैकेनिकल कंप्रेशन. अब हम दोनों एक्सप्रेशन को कर लीजिए कंपेयर. एल नॉट अल्फा डेल्टा टी ये हमने लिया है यहाँ से, राइट? और दिस इज इक्वल टू एफ एल नॉट ए वाई जो कि हमने लिया है यहाँ से. अब देखिए जो कैंसिल होता कर दीजिए, एल नॉट गेट्स कैंसल्ड, तो मुझे सिर्फ वाई चाहिए ऑन द लेफ्ट साइड. तो राइट में रहेगा एफ बाई ए और नीचे आएगा अल्फा डेल्टा टी. सो यू सिंप्लीफाइड फर्दर.
we get y equal to f divided by a alpha delta t. That is the answer. Now let's check out f upon a alpha delta t. कौन सा option है? So I think, yeah, this is there. F upon a alpha delta t. B option is the correct option for this question. Okay, now let's move on to question third. Y, K and eta, these are Young's modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. तो इनके बीच में पूछा गया है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट एक्सप्रेशन है. So we start like this. We know that 9 by y is equal to 1 by k plus 1 by eta into 3. That is 1 by k plus 3 by eta is 9 upon y. This is a standard result. Now, I just want to know the value of k. Therefore, because नीचे जो expressions हैं y, y, eta, k, ये चार expression हमारे पास options में available है, right? So let us simplify it. It becomes now 9 by y minus 1 by k is 3 by eta. कैसे किया? I've simply shifted this term on the left hand side. Alright. Now you simplify by taking LCM. Y eta, it is 9 eta minus 3y is 1 by k. Alright. Then take the reciprocal, that is k is equal to y eta divided by 9 eta minus 3y. Let's check out which option is it. Y eta 9 eta minus 3y. So it has to be 9 eta. And right, this is the option as you can see. So we can say C is the correct option for this problem. Okay, now let's move on to question fourth. इसमें आपको जो पूछा जा रहा है वो है कि when in case of bulk modulus you change the density by applying external pressure, what that value of increase in density will be. सबसे पहले तो देखें हमारे पास एक फॉर्मूला है that pressure is equal to bulk modulus into delta V by V. As per the question, bulk modulus यहाँ पे represent किया गया है K से. So I'll also write this way. All right. So what is K equal to? K is P divided by delta V by V. You call it number 1. All right. Now as our density is concerned, ये होता है mass by volume. Since mass is constant, we can say density into volume is constant. That's all right. So change in density per unit density should be same as change in volume per unit volume. All right. Now do one little trick. This value should be substituted here. All right. So see what we get. K is equal to P divided by, instead of writing delta V by V, you have to write delta rho by rho. All right. You simplify it further, it becomes P rho by delta rho is equal to K, and therefore delta rho is equal to P rho by K. This is the answer. Now let's check out P rho by K is which option? P rho by K is option A. So I must mention here A is the correct option. Okay, now let's move on to question fifth. आपको बताना होगा elastic energy stored in a wire. You know, elastic energy stored in wire, that means elastic potential energy is half force into extension. All right. So यहाँ पे फोर्स है 200 न्यूटन, तो हाफ इंटू 200. लेंथ कितना इंक्रीज होता है 1 मिलीमीटर, विच इज दिस मच मीटर्स. सो इट इज नाउ 10 पावर माइनस 1, that is 0.1 joule, and that means option D is the correct option for this question. Okay, now let's move on to question 6. Stress and strain का formula, as you know, half stress into strain, that is elastic potential energy per unit volume, right? और हमें ये भी मालूम है stress is y time strain, ठीक है. So strain is S divided by y.
Let's make that substitution here. So I can write now half stress into strain, which becomes s squared by 2y, and that is the answer. S squared by 2y is option D. So I mark here D as the correct option. Okay, now let's move on to question 7. There are two steel wires having same length are suspended from a ceiling under same load. यानी लोड भी सेम है और उनकी लेंथ भी सेम है. ये बात याद रखनी है आपने. Then ratio of the energy stored per unit volume. So U1 by U2 is 1 is to 4. Ratio of the diameter. ये पूछा जा रहा है आपसे. To simplify this, let's give it number 1. And as you know, ये होता है half stress upon strain जो कि s square by 2y भी होता है as you've just seen in previous question, right? तो इसके पिछले क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला यूज किया है. नाउ इसमें एक चीज क्लियर है हमें कि स्ट्रेस तो होता है फोर्स बाय एरिया. मेक दिस सब्स्टिट्यूशन हियर. इट बिकम्स नाउ एफ स्क्वायर बाय 2y a स्क्वायर, दैट इज u. अच्छा, इसको बड़ा ध्यान से देखना है. फोर्स कहा गया था, यानी लोड सेम है ना, सेम लोड एंड सेम लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ओनली डिफरेंट. तो ये मटेरियल भी सेम है, तो हम जिसको येलो शेड किया वो सब कॉन्स्टेंट्स हैं, सेम है. तो आई कैन राइट U, that is elastic potential energy per unit volume is proportional to 1 by A square. So U1 by U2 should be A2 by A1 whole square. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे एंड ओवरऑल फिर स्क्वायर आएगा, राइट. these two get cancelled, so r2 by r1 whole power 4. As you know, radii means if you multiply with 2 in the numerator and denominator, you get diameter ratio. All right, so it is like this, d2 by d1 power 4. So now we'll make use of an expression labeled as 1. ये था 1 हमारा u1 by u2 is 1 upon 4. ठीक है, so it's 1 by 4 is equal to d2 by d1 whole power 4. And that means d2 by d1 when squared, यानी मैंने रूट ले लिया 1 by 2. So d2 by d1 becomes 1 by root 2. All right. लेकिन आपको तो डायमीटर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो पूछा गया था. सो वी मेक इन्वर्ट एंड डू, दैट इज इन्वर्स कर दिया. रूट 2:1 is the answer. Now let's check out root 2:1. That is option B. So I can mark here that option B is the correct option for this question. So dear students, with this we end today's discussion on PYQs of NEET Direct Day 17th and day 1 of mechanical properties of matter. And that's all for today, and God bless you all.